शुरू से ही हम लोग कागज चीनी वाला काम करते हैं। अगर हम लोग कागज भी चुने जाते हैं तो उसमें तो 200-300 पर डे, 400 अगर अच्छा हुआ तो। अगर बरसात हुआ सारा ज़मीन तो भीग जाता है, उस पर तो सारा कचरा भीगा हुआ रहता है। पानी में कचरा भी रहता है, नली भी जो नली रहता है गंदगी, उसमें भी हम लोग का जाते घुस कर बोतल हो गया, कागज़ हो गया, चुन कर लाता तो धूपा में सुखा देते हैं। हम स्कूल में ही जाने कि मुसहर जो है घिनावटी चीज़ है, घिनना मानते हैं। टॉर्चर भी हुआ है स्कूल में, जब पढ़ने गए तो है मुसहर कहाँ बैठेगा इसको मत बैठाओ। Suraj Kumar is from the Musahar community in Musahari, Patna. The Musahars are one of India's most marginalized groups. They face multiple layers of discrimination, economic, social, and caste-based. हम लोग जाति में देते कि अगर किसी भी गली में मोहल्ला में चुनने भी जाता, कागज चुनने भी किसी के दीवारे पे भी बैठेंगे, तुरंत बोला कि हट जा, पानी मार दो, काहे बैठा। लेबर मिस्त्री का क्यों नहीं जाते हैं काम करने, क्योंकि उसमें भी पैसा कम है, 350। लेकिन मजबूरी देखिए, गरीबी देखिए। ठीक है, धन्यवाद। राकेश जी हमको एक जगह मिले थे, जब वहाँ पर हम कागज़ छोड़ रहे थे। राकेश भैया वहाँ पर बुलाएं, खिलाएं पिलाएं, खाना वाना खिलाएं। एक समय आया था कि जब बहुत भूखे मर रहे थे, लॉकडाउन। बाथरूम बना आप लोग का? आधा अधूरा कैसे बनल है? Rakesh Kumar is a social worker who has been helping the community since 2014. तो सूरज का घर यही है? कहना है सूरज? क्या हो? तो कोई लोग ये पेंशन ना मिलता है जी? क्या नहीं बना है? लगातार पॉलिसी पर, डिसेबिलिटी राइट्स पर और सोशल चेंज पर, सीवीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन पे मैं पिछले 15 सालों से बिहार में काम कर रहा हूँ। हम अपनी बात बता रहे हैं। हम विकलांग हैं दोनों पैर से। अब विकलांग होने के नाते हमको तो काफ़ी समस्या होगा। जब विकलांग को इतना दिक्कत होता है तो ये तो मुसहर है। अब मुसहर में भेदभाव जो है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। छुआछूत जो है आज भी ये ज़्यादा है। अभी लोग के पास जाके हम नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? While poverty in India has decreased, no doubt, the inequalities have increased substantially. The richest 1% in India own most of the wealth. For instance, the bottom 50% in India own only 3% of the wealth in India. We need a society where opportunities for all are equal. Our Indian growth process is not just one that has generated more inequality, it's actually based on inequality. All the growth is concentrated in the top 10, maybe 15% of the people, which is still a large economy. 15% is what, 200 million people? That's a pretty large economy on its own. But the other and critical way in which this growth has been based on inequality is on the other inequalities that pervade Indian society. We've got, you name it, caste, gender, ethnicity, language, location, rural, urban, small town, large town, you name it, we've got all these inequalities, okay? So they're all interlocking, but what
one of the critical things they do is they create segmented labor markets. So by caste, there are certain castes condemned to do certain kinds of work still in India. Even the public sector, when it employs sanitation workers, employs people of a certain caste. In 2023, the Indian government released a report revealing a significant problem in its workforce. Certain historically disadvantaged groups in India, known as scheduled castes and scheduled tribes, are disproportionately found in lower-level government jobs and much less likely to hold higher-level government positions. देखिए भाई, हम लोग खाना जितना इस खाने के लिए आदमी क्या नहीं करता है। खाना बच भी जाता तो हम लोग बासी को से खाना रखे हुए रहते हैं, छुच्छे बात है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, शाम को सुबह वाला खाना इसको भून कर खाएंगे, तेल में डालकर, कड़वा तेल में डालकर खाएंगे, फिर ये खाना वाना खा के सो जाएंगे। सो जाते हैं दीदी, इस चौकी पे कुछ लोग डेढ़ सो जाता है, बाकी हम लोग नीचे सो जाते हैं भुइया में। बस जेंट्स लेडीज़ सब एक जगह, लेकिन अलग अलग हो जाता है। जेंट्स लोग सो जाते हैं चौकी पे, लेडीज़ लोग सो, जितना लेडीज़ जो बहन वाइफ है सब नीचे सुला देते हैं। One of the most pressing issues for the Musahar community is food insecurity, their diet choices limited by poverty. 1 किलो चावल। अब 11 फैमिली हम लोग हैं, तो 200-300 का जो राशन लाएगा तो एक ही दिन में 200-300-400 तो एक दिन में खर्चा हो जाएगा। अब सुबह तो पता नहीं है कि हम दाल भात खाएंगे कि रोटी खाएंगे कि सब्जी खाएंगे, क्या खाएंगे, उसका कोई स्थिति नहीं है। सप्ताह में एक बार तो जो चूहा हो गया या तो मेढक हो गया। देखिए बड़ा घर में क्या है कि बड़ा घर में कि चलो मम्मी के बोलते आज मुर्गा बनाते हैं, हम लोग के दीदी कि जाओ चूहा पका के लाओ, उकड़े में हम खाएंगे पिएंगे। India's government addresses food insecurity through a long-standing ration card system for its impoverished population. Launched in 2019, the One Nation, One Ration Card scheme enhances the existing system by allowing beneficiaries to access subsidized food grains from any fair price shops across the country. We have had for a long time actually the ration system, which is subsidized food under the Food Security Act going to the poorest in India. But if you look at the numbers, it's 80 million people. I totally support the ration schemes, but instead of throwing fish at people, we should give them the rod. We shouldn't be in a situation where we have to every year continue with this scheme. People should be able to choose what they eat. People are undernourished, such high levels of anemia and undernourishment. तो राशन कार्ड न रहने से देखिए क्या क्या दिक्कतें का सामना हो सकता है। पहला है कि इनके बच्चों का कुपोषित हो जाएगा, भूखे हो जाएगा। तो पत्नी जब प्रजनन होगी तो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, बच्चा भी पौष्टिक नहीं बन पाएगा और पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। बहुत ही सब ये आधार कार्ड है, हमारा फैमिली का भी आधार कार्ड है। There are also issues in the distribution of rations. Many of the scheduled castes lack official documentation, and even with documentation, they often face difficulties in using online systems and performing biometric verifications. हम लोग का लूढ़ भाष नहीं है कि हम किसको पास जाए राशन बनाने, कहाँ पर जाएं, कौन जगह जाएं, किससे पूछें, किससे नहीं पूछें। 2 महीना पहले गए मुखिया जी के पास तो बोले कि बना दीजिए अंकल, मुझे जो बहुत आपका हेल्प हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है बन जाएगा। 200 रुपये लिया, नहीं बना। You know, sometimes I say we are a very scheming society. We do make schemes, but the quality, effectiveness, we don't even measure. For my last 4 decades of work in rural areas, investing in the most marginalized, I find the inefficiencies, corruption are phenomenal. People don't even know what are their entitlements.
So these schemes become ineffective. अगर राशन अगर कार्ड बन जाता है तो हम लोग का थोड़ा बहुत स्थिति ये चीज़ डेवलप होगा कि हम लोग का भी सोसाइटी चेंज होगा। कोई भूखी पेट नहीं सोएगा, नहीं चूहा खाएगा। अगर राशन कार्ड बन जाता कोई घर में भी इंसान कोई भूखे नहीं मर सकता है। हर महीने अगर राशन मिलता है राशन कार्ड के थ्रू तो हम लोग घर चल सकता है और चला सकते हैं, अब बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। Suraj was the first in his family to graduate from high school. पढ़ाई तो हर कोई इंसान चाहता है कि हम पढ़ें लिखें कुछ करें, लेकिन हर एक जगह पे मेरे जाति में सिर्फ घर का स्थिति देखकर पढ़ाई रुक जाता है दीदी। हम पढ़े हुए हैं, ठीक ना, अब पढ़ना चाहते थे। मेरा सपना यही था कि टीचर बनने के लिए सब जात का लड़का लोग का पढ़ाएंगे। सपना सपने तक था। बनाओ हाँ बनाओ, इसी के ऊपर बनाओ, इसको भी बनाओ। हाँ ये भी कर दिया ना। Anshu is a mother of 5. She's a daily wage worker, earning around $6 a day. मेरे पेरेंट्स नहीं थे उस टाइम पे, तो मेरी पढ़ाई कुछ ऐसी थी, तो हम लोग पढ़े नहीं थे, तो हम ऐसे रहे अंगूठा छाप। हम थोड़ा पढ़ लेते तो समझ में आती हमारे। सपना तो था पर वो ये ना घर में हालत ऐसे थे कुछ हमारे। पूरे हाथ की रील कितनी है? ऐसे नहीं, हाँ कितनी हुई है? 5। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको अच्छी जॉब मिले, हमारे बच्चे बहुत अच्छी उस पर जाए पहुँच पे। जैसे हम लोग रह गए ऐसे नहीं रहना चाहिए हमारे बच्चों को। बड़े बच्चों को तो मैंने सरकारी स्कूल में डाला था, फिर आंगनवाड़ी स्कूल बच्चों का जब सुना था मैंने तो फिर मैंने उसमें डाला था। India has 1.4 million Anganwadis nationwide. These are government-run daycare centers for children up to 6 years old, launched in the 1970s to address child and maternal malnutrition. They also provide universal access to early childhood education. बोलो मुझे जोर से गुड मॉर्निंग मैम। प्रिंस, अरे गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को जैसे शिक्षा देते हैं, जैसे 3 से 6 साल वाले बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा देते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं। जल्दी आओ, शाबाश। छोटा बच्चा हो 3 से 6 साल वाले बच्चों का 80% दिमाग मतलब 6 साल तक ही उसका डेवलप होता है। कोई सर की तरफ नहीं देखेगा, सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, ठीक है? सारे बच्चे आंखें बंद, किसी की आंखें नहीं खुलेगी, नहीं तो टॉफी नहीं मिलेगी। इसलिए हम बच्चों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ाते हैं कि बच्चे का बेस सही रहे। Studies have shown Anganwadis have positive long-term impacts, but many still lack trained staff and resources. One survey found that almost 80% of centers lack sufficient teaching materials. As most of you know, I think we are currently working with around 3 million parents and children, right? Siddhant Sachdeva saw a desperate need to address these shortfalls. He and 4 other partners set up Rocket Learning, a non-profit built to support the Anganwadi infrastructure and enhance early childhood education in India. It's an area he has some experience with. My mother actually runs an affordable private school out of our home for the last 2 decades, where a lot of 3 to 6-year-old children come to study basic foundational literacy and numeracy. A, फिर E तक आ गया. What I also saw was that there are communities who are not getting access to this education, and I always wanted to work towards that cause. It's commonly said that it takes a village to raise a child, which is rightly so. अभी बेटा ये क्या है, सारे गाड़ी बूढ़ी सब जोड़ दे एक बार। So at Rocket, we are trying to mobilize communities, including their school and daycare system, including the parents and caregivers around them, including the governments who are responsible for the education. शाबाश, क्लैपिंग करो।
if you make that investment in young people through better early childhood education, giving it a strong foundation, improving our education system, both in the private and public sector, in terms of nutrition, education, and opportunities for skilling as they go to higher education or higher secondary, we will be able to, in 10 years, turn the tide. तो बहुत मुश्किल है, अब हम ऐसे नहीं बता सकते. Siddhant and his team train teachers and design learning programs for children. They send out daily guides to teachers via WhatsApp that can be used during their lessons. पहले हमने पेरेंट्स के साथ ये ट्राई किया था कि पेरेंट्स को तो एंगेज करें. अभी बाद में हम ये भी ऐड कर रहे हैं कि इस हफ्ते क्या क्या एक्टिविटी करानी है, वो सारा एक बार बन के आ जाएगा आपको कि ये कैलेंडर है, ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं, कुछ डेमो भी. रॉकेट लर्निंग से जुड़े हुए, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ. 1 वीक की ट्रेनिंग हमें रॉकेट लर्निंग के जरिए दी गई थी. कई चीज़ें क्या होती हैं कि हमें भी नहीं पता होता कि कैसे करानी है, लेकिन रॉकेट लर्निंग में जो जैसे पोएम जो दी जाती हैं, जो उनका अपना तरीका है जो करवाने का. Savita has been a preschool teacher for 4 years now. She wishes parents could be more actively involved in their children's early education. जब तक पेरेंट्स साथ नहीं रहेगा तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये बात एक पक्का है. पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा महत्व. हमारे पास बच्चा कितने घंटे रहता है, 2 घंटे या 3 घंटे, उसके बाद तो पेरेंट्स घर पे ही रहता है. जो चीज़ें हम यहाँ पे करा रहे हैं, मान लो हम कोई भी प्रैक्टिकल कोई चीज़ यहाँ पे करा रहे हैं, तो वही पेरेंट्स घर पे अगर करवाएगा तो वो बच्चे को ज़्यादा माइंड में बैठती है. बहुत सारी रिसर्च हुई है छोटे बच्चों पे, जो ये बताती है कि अगर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ अगर माता पिता घर पे 30 मिनट भी बिताएं कुछ गतिविधि करने में, कुछ खेल में, सिखाने में, तो उससे बच्चे 25 से 30% बेहतर पढ़ते हैं, बेहतर करते हैं आगे की कक्षाओं में. Rocket Learning creates short educational videos and activities that parents can use to help their children learn at home. They're shared on WhatsApp, making them accessible to families, even in India's most remote regions. सबसे पहले तो क्या हुआ कि जैसे पेरेंट्स भी इससे साथ जुड़ गया बच्चे के साथ है, और पेरेंट्स भी बच्चे को जैसे कि टाइम दे पा रहा है. पहले क्या था कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहा था. मैंने ये पहन लिया, आज क्या करेंगे अभी? The Perry Preschool project, which is a very famous, iconic global study, indicates around 12 to 13x return on investment of any dollar spent on early childhood education. एक बार क्या होता है, मोनू नाम का एक लड़का होता है. There's a study in India, which was recently published in Vellore, which also suggests that structured early childhood interventions have the potential to actually improve IQ by around 5 to 6% for an entire base of population. Rocket Learning aims to triple its reach to 10 million children annually within 5 years. Educational technology has been making inroads into rural India and can transform entire families. Anshu, once illiterate, is now learning alongside her children. Her story reflects the experience of many families like hers in India. ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं पढ़ाई के साथ, तो जो पेरेंट्स भेजते हैं, माँ बाप जो वीडियो भेजते हैं, तो वो वीडियो भी अच्छी लगती है. कहता है मम्मी इसमें देखो कैसे आ रखा है, तो हम देखते हैं, समझते हैं कि इन्होंने ऐसे भेजा, तो हम थोड़ा हट के करते हैं. There are opportunities for digital education and there are programs, there are schemes, but the problem is infrastructure. People may get a device, but to get the internet, the cost as well as inadequate infrastructure, India needs to invest at a fast pace because that's an opportunity we are missing. Over the past decade, India's internet users skyrocketed from 1 in 7 people to more than half the population. Despite progress, parts of rural India grapple with unreliable, low-quality internet. For many women from rural areas, dreams of higher education and meaningful careers often remain just that, dreams. "18-year-old Payal Nade stopped school when she was 12.
a fate common among girls in her community. मेरा मतलब एक ही सपना है कि मैं घर के लिए कुछ करूं, जॉब करूं, पैसे कमा के दूं। कभी कभी खाने के लिए नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ घर के बारे में तो मुझे रोना आ जाता है। After the 7th grade, midway through middle school, Payal spent 2 to 3 years at home without any formal schooling. Her thirst for education eventually led her here to Sajay Sapne, a social enterprise dedicated to empowering rural women in India. तब मैं साझे सपने में आई, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोर्स में मैं सेलेक्ट मतलब यहाँ आ गई। 7 महीने हो गए मैं वो कोर्स कर रही हूँ। पायल अपनी टू डू में लिखो प्रोजेक्ट पोटेंशियल आज ही। Sajay Sapne offers year-long training programs teaching coding, designing websites and project management. They also have math courses for aspiring teachers. Students are women from marginalized backgrounds from across India. तो मुझे बहुत अलग ही देखने को मिला। मतलब वहाँ पे मैं स्कूल में जाती थी, मेरी सारी फ्रेंड स्कूल में जाती थी और यहाँ पे कोई नहीं जाता था। वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादातर मांगने जाती थी, लोहा निकालने जाती थी, वहाँ पे जाती थी। कोई कोई तो घर पे रहती थी। मतलब मैं बाहर से आई थी तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल थे और मैं पूछती थी भी उनसे कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो बोलते थे कि स्कूल में जाके करेंगे क्या, स्कूल करेंगे फिर उसके बाद शादी कर देंगे। One survey revealed that 1 in 5 girls in rural India abandons her studies due to family constraints. These women have defied tradition, family expectations, and even early marriages to get here. Surbhi Yadav, raised in a farming community, beat the odds to get an education. She's founded Sajay Sapne, Shared Dreams, to help other rural girls do the same. We want to kickstart sort of a women's movement in India, which is focused on rural women's learning, earning, excelling, and most importantly, dreaming. We keep calling it काबिल कमाओ कामयाब अभियान चलाना है हमको भारत में, you know. Sajay Sapne, or Shared Dreams, goes beyond education. It opens doors to a world of possibilities, reshaping the dreams and futures of young rural women. Women from across India are gathering in these remote hills of northern India to learn career-building skills, all because of one woman's unwavering belief in rural potential. There is a lot of rage and there is a lot of wonder that I have within me when I think about rural women. We've just disconnected them from their dreams. Like India has a crisis of not believing and not investing in its rural women. And it's a crisis of social and economic justice, you know. We need to start investing in opportunities for not just poor quality education, but better quality education so women can have opportunities of economic growth, dignity. Which economy has succeeded without participation of women as the economic workforce? This social enterprise wants to go beyond teaching skills. They want to change mindsets, both of their students and the communities. जॉब कभी कभी लगती है, कभी कभी नहीं लगती, पर यहाँ से जो सीख के जा सकते हैं वो खुद का कॉन्फिडेंस और खुद पे भरोसा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अपने आप पे भी भरोसा नहीं होता. We have seen that the social norms start changing. And the way we have done it, we have designed a rural college model called Sapna Centers. Sapna Centers become these vibrant places where women come together, you know, they question, they ask things, they play, they dance, and they explore themselves and explore the world. तो आप लोगों को क्या लगता है
ये मालूम हमें होना चाहिए या नहीं। 21-year-old Pula Kumari is a content creator and facilitator in this center. She is from one of India's most marginalized communities, the Musahars. It's hard to imagine that just a few years ago, she was learning how to sew under a government scheme and preparing to get married. साझे नहीं आता मेरी लाइफ में, तो शायद मैं नौकरी क्या होती है वो जानती भी नहीं या फिर करती भी नहीं, और शायद यदि पढ़ भी ली 12th तक तो किसी सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही होती। इंटरव्यू तो one person will be manager and second is employee. As a facilitator, she helps other young women from similar backgrounds develop skills and find their own paths to meaningful careers. Pula's teaching style is deeply rooted in her own experiences. Here, they emphasize the importance of using relatable language and concepts to help students understand complex ideas. साझे में हम लड़कियों को ना क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने के लिए हमने ना कुछ गाने बनाए हैं और फिर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो हिस्सा है। जैसे मैं आप ही गा कर बताती हूँ, जैसे खुद से सोचो, इंटरनेट से पूछो, पूछो सपना दिल से, फिर भी समझ ना आए तो पूछो दीदी दिल से। Sajay Sapni aims to empower rural women to enter India's booming $250 billion IT industry. This sector employs over 5 million people, with women comprising 36% of the workforce. वो लड़की के पहले तो अंदर का माहौल बदल रहा है, क्योंकि जब तक वो अंदर का माहौल नहीं बदलेगा ना, उसका वो बाहर का माहौल नहीं बदलेगा। तो आवर कोर्स, आवर पेडागोजी, सपना सेंटर का पूरा पेडागोजी इज हिंज्ड ऑन द फैक्ट कि उसके अंदर का माहौल बदलना चाहिए। मतलब वो उसका जब दिल और दिमाग, व्हाट वी कीप सेइंग, दिल दिमाग दोस्ती खुले खिले, लाइक दैट शुड बी साझे's culture. 90 young women have graduated from courses here since its founding. 75% of them are now in careers of their choosing. As more women find empowerment in rural India, another challenge looms large in those same communities. 28-year-old Vandana Moria, a mother of two, lives in Sarakpur, a small village in Uttar Pradesh. Most of rural India, home to 2/3 of the population, often lacks one critical service. मतलब तुरंत आपको अगर आराम चाहिए तो, लेकिन बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल पाती, उसके लिए हमें रायबरेली जाना पड़ता है, जो यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है। वहाँ पर जाने के लिए हमें कन्वेंस या फिर किसी के साथ जाने की ज़रूरत पड़ती है। The journey to receive proper medical care is often long and arduous for Vandana. Being a mother makes it even more challenging. यहाँ जाने में समय भी लगता है, लगभग 1 घंटे समय लग जाता है, वहाँ पर बैठना भी पड़ता है, मतलब पूरा दिन निकल जाता है कभी-कभी तो। Vandana's health problems began about 3 to 4 years ago, shortly after the birth of her younger daughter. जैसे कि मैम मेरी लगभग 2 साल पहले यही पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब कभी उल्टियाँ होती थी तो लगातार 1 दिन पूरा हम मतलब एकदम परेशान हो जाते थे। तो उसके बाद मैम मैंने रायबरेली में दिखाया, रायबरेली में कुछ दिन तक हमारी दवा चली, उसके बाद भी हमको आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि अब हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, फिर हमने लखनऊ में दिखाया। तो लखनऊ में हमने दिखाया तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए बोले, अल्ट्रासाउंड जब करवाया हमने तो वहाँ पे बोले कि आपको अपेंडिक्स है, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। You see, 70% of India lives in villages, but 80% of the health infrastructure in the private sector is in the urban areas. So the struggles, the cost is not only of medical treatment, but the cost of travel, stay. Just to give you an idea how low our health spending is, the global average of public health spending to GDP is around 3%. Ours, for central government and state governments taken together, everything taken together is less than 1%.
If you don't have a healthy population, you lose out on so much else. And of course, your own economy suffers as well. But it's not just that you want it for the economy. You want an economy in which everybody is healthy. You want a society in which everyone is healthy. And that means equitable access. We must try and make sure that we get good preventive and curative health facilities for everyone. Siblings Shubhang and Smriti want to make healthcare more accessible to people in rural areas. In 2016, they started a telemedicine app called Online Chikitsa Mitra, or Online Healthcare Companion in English. At this stage, we are essentially targeting all the rural communities right now in India. We partner with medical store owners in the remote areas. So once we are partnering with these medical store owners, we provide a digital setup there. So we are providing them with a portal or a software, which is then installed either of their choice of gadget, either a system or a desktop or even on their mobile phones. And the e-clinic is then activated in the purpose. We train their staff there how to take the vitals and important measurements of vitals for any patient that comes in. पहले थी मगर अब तो नहीं हमको मालूम पड़ता कभी पहले बीपी बढ़ जाती थी घर से आपका कोई दवाई गोली तो नहीं चल रहा है? नहीं कोई दवा नहीं चल रही हाँ सर्दी जुकाम खांसी रहती है बस 67-year-old Gurncham Bajpai has been facing health issues for the past 4 years. In the past, he managed his symptoms through pain medication, providing temporary relief. But recently, he started online consultations at this medical store. कभी कभी डॉक्टर साहब ऑनलाइन दवा दिलवा देते हैं अपन दवा दे देते हैं बाद डॉक्टर साहब पर्चा बना देते हैं पर्चा ऑनलाइन निकलवा लेते हैं वही वीडियो कॉल से बात होती है उनसे संपर्क से बहुत बड़ा फर्क पड़ा और दवा भी बहुत अच्छी करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या गांव में तमाम कारणों से ज़्यादा रहती है शिक्षा का अभाव इस तरह से यहाँ 6 महीने में एक बार पैसा आता है लोगों के पास यहाँ जब नौकरी के पैसा लोग कम हैं 70 से 80% लोग खेती से जुड़े हैं बहुत से लोग बाहर विदेश में हैं या दूसरे प्रदेशों में हैं तो महिलाएं हैं या बहुत गरीब लोग हैं स्वच्छता के अभाव से तमाम बीमारियां भी हैं वो शहर जा नहीं पाते यही दम तोड़ देते अभी कोई दिक्कत है इन्हें Rajendra Prasad Singh has been running this medical store for 26 years now. Since the advent of Online Chikitsa Mitra, he has evolved beyond his role as a pharmacist. His store now serves as a primary healthcare provider, offering online medical support in the absence of nearby clinics. कब से कितना दिन खराबी कभी कोई सफाई खराबी So we're just trying to fit in the entire ecosystem which already exists in the rural, which is the medical store. You have to be one of them to be actually be trusted and to engage with the patients there. Dr. Singh is a retired doctor from Balrampur Hospital with 35 years of experience. He's one of 50 doctors serving Online Chikitsa Mitra. तो ये मेरे दिमाग में पहले से ही था जब शुभांग मेरे पास आए तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा गांव के लोगों को जहां पर कि सरकार तमाम प्रयास के बावजूद भी डॉक्टर नहीं जा पा रहे हैं उनको आप सेवा देंगे ये आपके लिए ही नहीं इस देश के ग्रामीण इलाकों के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी एक्सरे रिपोर्ट जो सर एक्सरे रिपोर्ट भेजी है उसमें सब कुछ निकला है ब्रांकोवास्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है उसमें केवल आप एक्सरे की भी भेजी They now partner with over 500 e-clinics across India. But one challenge remains. Today, co-founder Smriti is conducting an awareness campaign.
जैसे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य हम बेहतर करने की कोशिश कर She रहे has हैं। worked tirelessly to overcome deep-seated skepticism in rural communities among women. Addressing the disparity in women's healthcare is a key challenge for the team, given the historical neglect of women's health issues. बहुत ही अच्छा लगा। Our team are deliberately like working continuously to educate these women that you can come out, you can speak about your health concerns, you can consult a doctor, you can consult a female doctor. And when we have our doctors, we ensure that they have a good counseling strategy as well in place, and they can make the patient at ease. It is very important because as it is something technological, they don't understand what is happening. This is what we're trying to tell them, that it's not a dream to get a good health advice at the end of the day. It is not a privilege at the end of the day to get medical help. It is your right, you can have it, you don't have to dream about it. That's where our aspiration really is. ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ 28-year-old college graduate Balka Sidhu comes from a family with deep farming roots. After several unsuccessful attempts to secure a government job, he found himself at a crossroads. Influenced by his friends, he began dreaming of a better and brighter future abroad. सभी जा रहे हैं मैंने सोचा चलो आइल्स का एग्ज़ाम देंगे और बाहर चलते हैं कनाडा. But life in these foreign lands often didn't match the rosy pictures painted back home. जो ना हम एक बार के बारे में सुनते हैं फॉरेन के बारे में, उसकी सारी अच्छाइयाँ ही हमारे सामने ज़्यादा मतलब प्रेजेंट की जाती हैं. जैसे सफाई, जॉब्स वगैरह, ये सारी मतलब मनी सेंट्रिक आप बोल सकते हो उसको. यही प्रॉब्लम वहाँ पे भी हैं, ड्रग्स हैं, सब कुछ है. वहाँ का हमें दिखाया नहीं जाता, अच्छी साइड ही हम देखते हैं. Balka and his family spent around $35,000 for his move to Canada. There, he worked various jobs: car mechanic, delivery driver, and construction helper to support himself. वहाँ पर ये फील होने लगा यार क्यों तंग हो रहे हैं, ज़रूरत क्या है हमें. लेकिन फिर भी ना एक हम पंजाबी में बोलते खिच जी नहीं जाती पिंड दी. वो फीलिंग ही है, कुछ और नहीं है. वो था मेरे अंदर. मैंने बोला चलो गांव चलते हैं. He came home a few months later. He is now an entrepreneur and works in embroidery. Stories like Balka's are becoming increasingly common. जो बाहर हैं अभी आने की सोच रहे हैं, उनको जैसे बल मिल रहा है, भी जाएंगे, काम करेंगे. Punjab's story has long been marked by outward migration. A recent study reveals that about 1 in 8 rural households has seen a family member move abroad, fueling concerns of a brain drain that could impact the state's future. Returning home from Canada after 14 years, Karin Orlak started a free consultancy service and YouTube channel to offer help and advice to those who want to return. हफ्ते में 10-10, 20-20 कॉल आनी शुरू हो गई. दिन के 4-4, 5-5 घंटे सुबह शाम मेरा उनके साथ शुरू हो गया. जी भाई. जी. He shares his personal experience and addresses concerns about returning home during these calls. Sometimes he receives up to 100 calls a month. तो वो अच्छा दिखा रहे थे, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे. अभी हम पंजाब को अच्छा दिखा रहे हैं तो लोग पंजाब की तरफ वापस आ रहे हैं. मेरी मोटिवेशन मेन ये है कि
मुझे ये कि पंजाब का यूथ यहाँ रहकर पंजाब के लिए काम करे। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अभी इंडिया भी ग्रो कर रहा है, पंजाब भी ग्रो कर रहा है। Chandigarh, the capital of two states, Punjab and Haryana in northern India, is quietly carving its own niche in India's startup landscape. Here, Vineet Khurana is working around the clock to support and nurture young local entrepreneurs. He is helping them gain access to basic resources that are typically found in major metropolitan areas. These include incubation spaces, training, mentorship, seed funding, and network access. One of our primary initiatives is incubation. We have these startup incubators located inside the government colleges in partnership with the government of Haryana. So we do a lot of sensitization, awareness drives, boot camps to bring these students to mainstream entrepreneurship. When they come to our system, then they're given access to the resources available with SSEC. And the most significant of that is the office space, which is made available to them at zero fees, zero equity model. She is a star of the incubator. जैसे इसने बिल्कुल ही So I have my interns and developer. I have website developer and for the performance marketing, I have another person who is freelancers. I'm just so expected annually turnover would be 30 lakhs. So projection is cheese की. So 60% is the repeat customer and through WhatsApp business and Instagram till now I was selling. Now I'll be selling through D2C. So we're doing good so far. Yes. Aim bit more higher now. We've seen a lot of reverse migration happening to the smaller cities across India. People who've been working in big cities and metropolitans are essentially moving back to the smaller cities. Majority of the technology companies are anyway operating in the remote manner, right? So people have distributed teams across the country while they set up their base in a smaller city. That gives them the quality of life, cheaper resources, and affordable rentals. They can also stay closer to their families. UEngage provides tech solutions for the food and beverage industry. So why the big tech companies are moving to the smaller cities is very simple. Improved infrastructure, the special economic zones that are built, connectivity to the bigger cities. I think that has improved by leap and bounds. The founder of UEngage, 38-year-old Samir Sharma, is from Punjab. His decision to base the company in Chandigarh rather than major cities was driven by a strong belief. Personally, I believe we need to have more cities. We need to have more, places in India, which can actually cater to the long-term employment requirements. It can't just happen for one Mumbai or one Bangalore. They've already done their part. This is the right moment when we should be heading back home, right? Trying to build those companies from the small places, and it is very much doable. As India's sprawling metropolises expand, a quieter revolution unfolds in the nation's Tier 2 and 3 cities like Chandigarh, redrawing India's economic map. So a lot of my potential target audience is actually in Bangalore. But being a Chandigarh-based startup or a Tier 2 town-based startup, that doesn't limit us that we can't work with them. There was a notion for a very long time about UEngage that we work primarily with Chandigarh-based brands. But honestly, that's not even 10% of our revenue base or our, I would say, current client base. So we are actually spread across India at this point of time. Stories like Samir's are helping change perceptions about opportunities in smaller cities. All good? But significant hurdles remain in bridging the rural-urban divide. Actually, अभी हम launch कर रहे हैं आपके लिए. If you look at small towns,
tier 2, tier 3 towns. A lot of Chinese development came from small towns. That was because they were able to meet the infrastructural constraints at that level. Electricity, roads, basic stuff like that, eventually internet. The spending that we are doing on public infrastructure, it has to be diversified. You have to have a vision that goes down to areas that are neglected. That requires multiple levels of government to coordinate their policy making. While challenges remain, ripples of reverse migration could bring new energy, ideas, and hope to the region. As more Punjabis choose to return and invest in their homeland, they're not just coming back, they're moving forward together. These stories tell the tale of two Indias. One, a nation brimming with immense potential, and alongside it, the other, wrestling with deep-rooted inequalities. In the face of daunting odds, India's youth are bridging divides with their determination and grit. Through their visions, we see an India reimagined, one of shared growth and dreams.